Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with the continuation part, that is a compartment model. In earlier video we explained in detail the compartment model, and also in the previous video we explained very clearly one of the compartment model with respect to mammillary model. How this mammillary model will be, approach will be there, and how the condition or approaches or importance has to be taken with respect to central compartment as well as the peripheral compartment in detailed we explained in the previous video. So those who are not watched, you can watch it and you can understand the what is a mammillary model, central compartment, and it's the peripheral compartment model. Continuing with that video, today we are discussing the particularly what is a quaternary model. What is a quaternary model? So depending upon the whether the compartment arrangement, as I in earlier class I mentioned, the compartment how they joined each other, that is whether parallel, whether it is in a series, these compartment models are divided into, are categorized into the mammillary model as well as the quaternary model. Okay, so what is this quaternary model? This is also one of the most important model in the compartment model. However, this model is less precise when comparing with the mammillary model. We will discussing in this video what is the quaternary model and how the arrangement of the compartment model will be there. So these quaternary model are compartments are joined to one another in a series like a compartments of a trains. You know the railway train bogies will be there ना, it is similar fashion will be there in quaternary model. So यहाँ पे कैसा रहता है quaternary model, मतलब कंपार्टमेंट जो रहता है ना, जैसे हम लोग मेमिलरी मॉडल में बताए थे, हम लोग सेंट्रल कंपार्टमेंट को पेरिफेरल कंपार्टमेंट जैसे सैटेलाइट इज कनेक्टिंग विद प्लैनेट. सो यहाँ पे कैसा रहता है, इंजन को जो बोगीज कंटिन्यूस कनेक्टिविटी रहता है ना, उस तरह से जो कंपार्टमेंट अटैच होता है ना सेंट्रल कंपार्टमेंट को, उसको बोलते हैं कैटेनरी. जैसे समझ लीजिए इंजन है, रेलवे इंजन है ना, वो हम समझ रहे सेंट्रल कंपार्टमेंट. बाकी का जो बोगीज रहता है ना, बाकी का जो ट्रेन बोगी रहता है ना, वो जो एक को एक कनेक्टिविटी रहता है ना, उसको उस तरह से कनेक्टिविटी जो होता है ना, वो जो मॉडल अप्रोच को बोलते हैं हम लोग कैटेनरी मॉडल. ओके, सो quaternary model in which the compartments are joined to one another in a series like a trains. Okay, and this model, that is a quaternary model, it is not a like a the physiological model or not like a realistic model. However, the organs which are connected in the body, it is not like a similar. Okay, hence the not observed as like the physiological anatomical, as the various organs are directly linked to the our body or blood compartment of the our body. So hence this model is rarely used. Look at this figure, you can understand that how the models will be arranged with the central compartment. So similarly, like mammillary model, this is in a first compartment, second compartment and third compartment. Again, the direction what the subscript describing, that is in a 1 2 or 2 1, it indicates the direction of the blood flow with the drug. And as usual, you know the K is in the first order rate constant. Like mammillary model also, the drug is absorbing through the first central compartment, or it is also called as a one compartment. So upon the absorption, it is entering into the central compartment, and it is possible that eliminated through this central compartment only, like in mammillary. So this first one, as you know that the central compartment, or you can say as a highly perfused and highly vascular organs are we are categorized or grouped into this central compartment. And this compartment is connected with the like a series another compartment that is called as a second compartment and third compartment. You see that the drug or blood is moving from the central compartment to second compartment. So that is why the direction K12 is there na, this compartment 1 to compartment 2.
and again from the compartment 1 to compartment 3 is there. So this from this to this are there. So K13 and K31 means the reverse process of the blood is entering from the 3 to 1. So ultimately what I want to say that the absorption, how the central compartment will takes place, and ultimately the elimination is also takes place from the सेंट्रल कंपार्टमेंट. ये कंपार्टमेंट से हम लोग ये जानकारी लेता है, जो सेंट्रल कंपार्टमेंट जो रहता है ना उसको कनेक्टिविटी रहता है पेरिफेरल कंपार्टमेंट. जो भी पेरिफेरल कंपार्टमेंट रहता है ना, दो या 3 या 4 ऐसे ही कनेक्टिविटी रहता है. जैसे ट्रेन को हमारा इंजन को हम जैसे बोगी ज्वाइन करे रहता है ना, उसी तरह से हम जो अज्यूम करते हैं इन कैटरनरी मॉडल में. जैसे ये ड्रग अब्जॉर्प्शन होता है जी सेंट्रल कंपार्टमेंट में हो जाता है, उसके बाद एलिमिनेशन भी दी सेंट्रल कंपार्टमेंट से होता है. और रेट ऑफ ऑर्डर कांस्टेंट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट. ओके, क्यों यहाँ पे अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है बोले तो ज़्यादातर यहाँ पे हाईली परफ्यूज्ड एंड हाईली वैस्कुलर आर्गन रहने से अब्जॉर्प्शन भी और द एलिमिनेशन will be majorly it depend on the central compartment, because the elimination process of the with depend upon the kidney is in a place an important role. Okay, so that is why elimination is also this. And the drug is moving from the drug क्या हो जाता है, एक कंपार्टमेंट से दूसरा कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट तीसरे कंपार्टमेंट, और तीसरे से दूसरा, दूसरे से एक से होता है ना, जो मॉडल को बोलते हैं हम लोग कैटरनरी मॉडल. मैं समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत ही सरल से कैटरनरी मॉडल मतलब क्या हो जाता है कंपेयरिंग विथ द मेमिलरी मॉडल. सो जो भी मॉडल रहता है ना कंपार्टमेंट मॉडल का, जो भी अगर जैसे समझ लीजिए मेमिलरी मॉडल रहने दो या कैटरनरी मॉडल रहने दो, इन दोनों में मेमिलरी मॉडल इज एन मोर प्रिसाइज व्हेन कंपेयरिंग विथ द कैटरनरी मॉडल. इवन दो द अरेंजमेंट ऑफ दिस कंपार्टमेंट लाइक है और बॉडी दैट इज एन फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली जैसे हमारा बॉडी में रहता है वैसा रहे तो भी ये जो रहता है ना रियलिस्टिक नहीं रहता है, बेस्ड ऑन दी this the grouping of the highly perfused and low perfused organ. ओके, सो मैं समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत ही सरल से कैटरनरी मॉडल के बारे में बहुत ही सरल से आपको समझ में आया. जो भी अगर मेमिलरी मॉडल के बारे में वीडियो नहीं देखे तो आप पिछले वीडियो देखिए, आपको बहुत ही सरल से मालूम हो जाता है. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर कंटिन्यूइंग विथ दी व्हाट आर द advantages or applications and also disadvantages of these compartment model. Thank you very much for watching this video.